हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे क्यू कार्ड सीरीज़ में नेक्स्ट क्यू कार्ड है टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम विच सॉल्व थ्रू द इंटरनेट। और मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है जिसका सॉल्यूशन आपने इंटरनेट पे ढूंढा हो। ओके, सो क्या प्रॉब्लम थी, कैसे सॉल्यूशन मिला और कितना टाइम लगा आपको सॉल्यूशन ढूंढने में। ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पे लिया है कि मेरे मदर का बर्थडे था और मुझे केक बेक करना था। तो मैंने यूट्यूब से सीख लिया। फॉर बॉयज़ आप ये बोल सकते हो कि मेरे रास्ते में बाइक ख़राब हो गया था और मुझे ये किसी ने बताया कि ये प्लग में कचरा आ गया है। सो आई वॉज़ नॉट एबल टू फाइंड मैकेनिक नियर बाय। तो मैंने यूट्यूब से वीडियो देख के खुद ही वो साफ़ कर लिया और आई ईज़िली केम होम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ये आइडिया भी दे सकते हैं। आप प्लीज़ अपने वर्जन में ये क्यू कार्ड ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। सो मेरा वर्जन सुन लेते हैं। We are living in the era of technology and internet is now in every nook and corner. In today's world, we cannot deny that internet is a great problem solver. So I also used internet to solve few of my problems, but today I'm going to talk about a time when I need to bake a cake for my mother's birthday. So on 1st of July this year, I wanted to bake a special red velvet cake for her to give her a surprise, but unfortunately I did not know how to bake a cake. So at that time I took help from YouTube and luckily I found so many videos. Well, I learnt it from the channel named Bake with Fun. She explained it very well. She also used very basic ingredients which can be easily available. So firstly, I collected all the basic ingredients such as cake flour, sugar, baking powder, cocoa powder, vanilla essence. And secondly, I use red food color because I didn't had any knowledge that how to prepare the natural one. So I bought it from the shop itself. So after that I did whatever is shown in the video. So I baked it as per the guidance. In the end, the cake turned out so soft, creamy and delicious. A bit burnt, but nobody can guess that. So that was the day when I took help from the internet, and it really made my day special because my mother was so surprised and happy that I baked a cake for her. So that day was really special for me and for my mother, and it was only possible with the help of internet. ओके गाइस, सो दैट वाज माय वर्जन। आप प्लीज़ अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए मुझे नीचे दी गई ईमेल आईडी पे। मैं चेक करके आपको रिवर्ट बैक ज़रूर करूँगी। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी मेरे क्यू कार्ड्स में हम ईडियम्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। सो इफ़ यू डिडंट गेट एनी ईडियम, do search the idiom video on my channel, you will get it. So there are 2 videos for idioms, 2 to 3 videos. आप प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आपको हर idiom का मतलब समझ आ सके और उसका यूसेज समझ आ सके। गाइज एज़ यूजुअल मैंने बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ की है एंड बिलीव मी, अगर आप सेम फ्लो से, जिस फ्लो से मैंने बोलने की कोशिश की है, आप बोलोगे तो यू विल गेट 8 बैंड्स। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट लेके आऊँ। बाय बाय, टेक केयर।